Okay, are we ready to move on? Good afternoon, everyone. Buenas tardes. Good afternoon. Hope I'm audible. Yes, sir, you are audible. Okay, perfect. Let's move ahead. Is there any doubt in whatever we did in the last class? Chicos, Buenas tardes, señor, sorry. señor. Muy bien. Buenas tardes, Devangana. Si hay alguna duda que tenéis? Means, do you all have any doubt? No, sir. Okay. Did you guys study? I did. Okay, perfect. Uh, then let's move ahead. I guess we were on somewhere. Unit 3. La escuela we have to begin. No, we have to do estar also. Sir, we were studying about Sir. Okay. So I'll show you first from the book where are we. Then you can follow from the book and then I'll type and then show. We'll go ahead with the mix. Okay. So we did this in the last class. We did the countries, we did the nationalities. Then again we did some professions. Then we completed the verb travakar, and I told you all AR regular verbs will be conjugated like this. Then okay, so today we'll do estar. Can you please mute? Please mute. Okay. Please, it's their request. Please don't unmute unnecessarily if not asked. Let's move ahead. Okay, so today we'll be doing estar. Then we'll go ahead with the classroom objects. Okay, with classroom objects, we'll be doing articles, definite articles and indefinite articles. Then we do the subjects. Then again, the verbs that we did earlier will be repeated here. Then AR, ER, IR, all the verbs. Then school timetable and the subjects again. Then we have got office or la oficina, because I'm sure most of you might be working as well. So we'll see all the conversations that take place or the vocabulary, related vocabulary. Then move to the counting and stuff. Then this would be the end of the first block. Then we'll try and start second block as well. So right now I'll cover. Let me see if we have say estar in the other block as well. Just give me a second. Okay, so the block 2 will have family, possessives, description of people, llevar. Okay. Okay, I guess let's do it right now only. Ser versus estar. That would be better to understand things. Then we have la casa. Okay, perfect. So right now we have done ser. We'll do estar also, and then the difference between the two. It's very important topic of Spanish. So we'll try and do it right now. Okay. So today it is 27th. So we did the verb ser. What do you mean by ser? Anyone? What do you mean by To ser? be. To 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 be. 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 To be matlab is, am, or Are. are.
जो बेसिक लैंग्वेज हम बोलते हैं एज एम आर, उसको हम बोलते हैं टू बी. दिस इज अ नॉन एक्शन वर्ब, इसमें सिर्फ एग्जिस्टेंस ही एक्शन है. इसका कॉन्जुगेशन क्या था? कैन एनीवन टेल मी राइट नाउ? Subject plus verb plus object. कॉन्जुगेशन. Soy, आप yo soy, Yo soy, tú eres, tú eres, and then you eres, are ella es, okay, the okay, usted okay. When es. someone asks the conjugation, don't, you need not say you to l, वो समझ में आ जाएगा. Just say soy eres es, somo soy son. Okay. okay. Soy eres es, somo soy son is the conjugation. And okay, let's do one thing. Can you give me an example of any sentence using the verb there? You may type it, you may speak it. Yo soy un estudiante. Yo soy. Yo un estudiante. Okay. Next. Anyone else? Yo soy de Delhi. Yo soy de Delhi. Perfect. O soy de Delhi will also be right. Anyone else? Tú eres muy inteligente. Muchas gracias, Shalini. Shalini says I am very intelligent. Soy indio. Soy Indio. Okay, Divya, if you're talking about yourself, you will not say India, you will say India. Okay, sir. Okay. You say okay, perfect. Uh, okay. Now let's move to another verb, which is a similar verb, and the verb is estar, which means to be is MR, and the conjugation is estoy. Please pay attention on the accents that I am putting. Okay, so it becomes estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Okay, there are accents on the last four. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Now this will be using the same logic that it depends on the number and the person, first person, second person, third person, or they are singular or plural. Okay, clear? Yeah. So this also means is MR to be. So now let's see what's the difference. Is there anyone who has some idea, who knows about it? Say is used for definite things, certain things, and star is used for conditions, temporary Okay, conditions. temporary conditions. ये किसने बताया? Devangna. Okay, anyone else? Chaliye, let's move ahead. More or less right, but there's a different way of looking at it. So let's see the uses of ser and estar. First, I'll talk about ser. Ser may we can use an acronym to learn the uses. The acronym would be doctor. Okay, and for estar it will be place. Okay, so now let's see इसमें हर एक वर्ड का एक अपना अपना मीनिंग है, वो इनके यूसेज डिस्क्राइब करेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. शेर में D stands for description. Stands for description. तो जहाँ पे भी किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, we'll use the verb शेर. इन सबके एग्जाम्पल्स I'll give you after I write all these. Then O stands for occupation. अभी हमने लास्ट क्लास में when we did yo soy estudiante, तो we did an occupation. Occupation है ना स्टूडेंट होना, या फिर yo soy profesor, I am a professor. Yo soy soldado, I am a soldier. तो ये सब क्या है? All these are occupation. Occupation. Then, yes, then we talk about characteristics. Okay, so whenever we talk about any kind of characteristics, whether physical or the nature of the person, we can write
we'll use ser verb. Example, he's tall, she's honest, or whatever we want to say. Then we move to T. T stands for time. So whenever we mention the time, we'll use the verb ser. Then we have got origin. Whenever we are talking about that I am from India, मेरा origin क्या है? India से हूँ मैं. So we'll use the verb ser, and the last one is relation or religion. Okay, clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So please note it down, and I'll make sentences one by one after I tell you the star also. Now, for star, we have got a word which is place. So P stands for any idea? P stands for position. L stands for location. A stands for action. T stands for condition. And E stands for emotion. So if you pay attention, इन सबके पीछे शन शन आता है. Action, condition, emotion. और यहाँ ऐसा कुछ रूल नहीं है, सब मिक्स्ड. Please know, इसको लिखेंगे तो you will be able to learn it better, because this is one of the most important topics in basic Spanish. If you do this wrong, the other person will understand that he doesn't know good Spanish or a lot of Spanish. Done. Let's move ahead. Sure, So what sir. I'll be doing, I'll be Yes. giving you examples of each, and at home you will be doing one more example each. So D stands for description. Example, I'll say, uh, la clase es muy grande. तो ला क्लासे अगर बाई चांस नहीं पता तो ला कासा तो पता होगा, आई एम श्योर. व्हाट इज ला कासा? The house. The house. द House. हाउस इज वेरी बिग. तो हमने हाउस को डिस्क्राइब किया, हमने हाउस का डिस्क्रिप्शन बताया. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ser verb es. Then we say nosotros somos estudiantes, meaning we We are are students. students. Perfect. Then we move to characteristics. With characteristics, we talk about Asia as honesta. She is honesta. ये हो गया characteristics. Or we can also let physical characteristics. Asia as alta. She is tall. Clear? Yes, sir. Okay, then we move to time. Although time हम लोग बाद में पढ़ेंगे. Then I'll give you example. But मैं एक example दूँ. Son las cuatro. Cuatro is 4, so it is 4 o'clock. You can write 5 also. Son las cinco, it's 5 o'clock. Then we can talk about origin, so we can write ellos son de Portugal. They are from Portugal. I can say ellos son portugueses. Okay. When we talk about relation or religion. Okay, sorry, let's move ahead. So we talk about now relation or religion. Example, I can say Aisha as mi hermana. She is my sister. So when I talk is, तो वहाँ पे आ जाएगा ser verb. And then religion, I can say Aisha as Hindu. She is Hindu. So we're talking about a religion here. Whenever we talk about a religion,
we use the verb ser. Am I clear? Sí. Muy bien, let's move ahead. Now I'll give you an example of estar. ये सब शेयर के थे. So I'll talk about the position. I'll say la casa नहीं बोलते mi casa está cerca नहीं cerca भी नहीं लिखते मैं लिखते हैं enfrente del banco. What is banco? Bank. Bank. It's bank. 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 तो my house is in front of the bank. मेरा घर बैंक के सामने है. Now let's see the location. We can write nosotros estamos en la universidad. Suppose आप लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं घूमने देखने के लिए कि कैसी यूनिवर्सिटी है. तो what you can say वहाँ जाके that nosotros estamos en la universidad. We are in the university. हम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं. ओके तो ये आपकी लोकेशन है. When we talk about the action, ये एक अलग टेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंटे continuo. Example, ella está estudiando español. Meaning she is studying Spanish. वो अभी अभी स्पेनिश पढ़ रही है. Currently, right now. Present continuous. इसको हम हटा देते हैं, जरूरत नहीं है. Okay. Then we move to the condition. So I can use example. Mi habitación está sucia. What is sucia? सर नहीं पता. Okay, sucia means dirty. मतलब मेरे रूम की हालत means the condition of my room is very dirty. Okay, then we move to the emotion part. So emotion में I can say nosotros estamos tristes. ये मैंने emotion लिख दिया. Triste मतलब sad. No. Triste means sad. So I'll written nosotros estamos tristes. We are sad. Okay. Yes. Yes, sir. Perfect. Yes, Saurabh, go ahead. Sir, it is compulsory to write first letter in capital. Hanji, in all the languages. Okay. Yes. Please go ahead. Sir, could you enlighten me on the accents? When do you use accents? Any particular? Too early to say, but right now whatever I'll tell is एक तो ION में बताया था, O पे आता है, स्टार में आता है. उसका रीजन है बिकॉज सिमिलर वर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं. तो ये तो डिफरेंशिएशन वाले. ओके सो एक्सेंट्स दो टाइप के होते हैं. एक तो डिफरेंशिएटिंग अ वर्ड फ्रॉम द अदर वर्ड. अगर दो वर्ड सेम है, एक के ऊपर एक्सेंट लगा तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है. एक तो वो होते हैं. Second is we use it on the basis of the sound. So there are many rules in fact. पूरी बुक की बुक है, but हम 3-4 rules we learn when the right time comes. Okay, Okay, अभी if okay. we focus on that, then we'll miss out on major and big things. Okay, thank you. So as of now, we can just pay attention कि जहाँ जहाँ पे accent आ रहा है, वहाँ पे we can just try and learn at least क्योंकि यहाँ पे है भी. Okay. तो ये वाला तो मैं बता दिया कि सियोन में ओ पे आता है. दैट्स ऑलवेज एन एक्सेंट. स्टार में 4 प्लेसेस आई हैव टोल्ड यू. 4 प्लेसेस कौन से? नीचे वाले चारों. ऑल दीज विल कैरी एक्सेंट. तो एस्टाज, एस्टा, एस्टाइज एंड एस्टान. ओके, एनी डाउट इन ऑल दिस? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले हम ये पूरी लिस्ट चेक करेंगे. अगर कोई भी इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा, सपोज कोई सेंटेंस आता है जो कि मुझे लग रहा है ना ही डॉक्टर में है ना ही प्लेस में है, then what do? We use a logic of all the permanent things on in ser and all the temporary things in star. Okay, ये सबसे लास्ट लॉजिक है.
although there will be few people or few teachers or few books that will tell you कि permanent and temporary सबसे पहले check करते हैं, no, सबसे last पे check करते हैं. That's the last thing we will check about uh, the usage of ser and star. Yes, someone had a doubt. Please go ahead. You raise the hand. Sir, even in emotions, when it is plural, we'll add, say, tristes. हाँ जी. Like हाँ, so example जैसे हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में, cansada, we feliz, or will not. something. हाँ, तो all the adjectives will be plural or all the adjectives will be masculine, feminine, singular, plural every time we write something. Example, आपको एक example दे देते हैं. Suppose मैंने बोला yo soy alto, meaning I I'm am told. tall. But if I write nosotros somos altos, we are tall. सर वी ऑल नहीं है. We all और we are एक ही बात है ना. हम और हम सब is the same thing. हम में भी तो आप सब लोगों की बात कर रहे हो ना. ओके ओके. That's just an you just stress कि मैं सब की बात कर रहा हूँ just to put more stress, तो we say we all, otherwise we and we all are the same thing. तो यहाँ पे if you pay attention, हमने इंग्लिश में तो we always say we are tall, तो यहाँ पे अब हम talls नहीं करते ना. इंग्लिश का सिंटेक्स क्या बोलता है that हम लोग एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते, but here we have to. So this is one of the rules you can learn. इसके बाद एक और रूल सीख लेते हैं अभी, जब यही Thank सीख you. रहे हैं Got तो. it, sir. We can learn one more thing. Suppose this girl, this line is said by a girl, तो वो यहाँ पे भी चेंज करेगी और यहाँ पे भी चेंज करेगी. तो if a girl says I am tall and she has to pluralize it, तो उसमें बोलना पड़ेगा nosotras somos altas. We are tall. Okay? Okay, sir. Is it clear everyone? Yes, तो sir. अब इसमें आप ये नहीं बोलेंगे कि सर आलतास कैसे हो गया, इंग्लिश में तो वी आर टॉल ही हो रहा है. तो वो इंग्लिश का सिंटेक्स है. सिंटेक्स मतलब जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, वो इंग्लिश का रूल्स है. इसमें स्पेनिश के रूल्स है. स्पेनिश में आपको नंबर और जेंडर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. नंबर मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल है, और जेंडर मीन्स मैस्कुलिन है या फेमिनिन है. यू टू टेक केयर ऑफ ऑल बोथ द फैक्टर्स ऑल द टाइम. Every sentence, these are the two things that are mostly mistaken by students, so we'll pay attention on these two, but that is number and gender. लिख लीजिए note पे if you wish to write, although this will come later on. So let's do a small activity where we can end up making different sentences from Ser and Estar जो यहाँ बने हैं. उसके अलावा if you think you feel you want to make any sentence, I'll give you 2-3 minutes, make 2-3 sentences in total, and then you can ask me and confirm from me if they are right or not. Yes, please go ahead. Who's raising your hand? In the time part in ser time, Hmm. sir, son la cinco. Can you tell me what is the meaning of it? It Son is la 5 o'clock. Sir, why do we use son here? यही तो जब हमने आपको बोला कि But जब we हम, use s. that's what I told you ना, that I'll teach you when I'll teach you time, the logic behind it. Okay, sir. जब हम टाइम करेंगे तब आपको सिखा. Once you're done, please let me know. We'll move ahead.
Ella es mi mejor amigo. Asia es mi mejor amigo is a wrong sentence there because you want to understand. You are saying Asia means she, वो लड़की है. But when you say amigo, you are saying a friend who is a Amiga. male. You have to write amiga. Asia es mi amiga. She is my friend. Okay. Next. El sol sale a las cuatro. सुप्रिया बच्चे इसमें तो शेर वर्ब है ही नहीं ना. Whatever you have written does not have ser or estar. Ella es muy bonita. Uddeshe is a right sentence. Estoy muy feliz. Emotion. Nosotras estamos aquí. This will work. Ella es mi hermana. Yo soy estudiante. ठीक है. Next. Others. So one you make with ser and one with estar, so that you know how to make one. First, second, homework समझ लेंगे if you want to practice at home. What you do is you make one sentence of each. D से description का एक sentence, occupation, characteristics, T और time छोड़ देंगे अभी हमने नहीं पढ़ा. You may skip time and you may skip action. Rest all things you can do and you can find words and you can make sentences with. Yo soy de China, yo estoy cansado. What do you want to say here? Is this is one sentence or these are two different sentences? One with Sarah and one with the star. Okay, perfect. Nosotros estamos en la clase. Okay, Radha. Él es camarero. Good. Let's move ahead. Tú eres una mujer. Él es. Okay, okay. Mi hermana es una médica. Okay, Indani, pay attention when we mention professions, we don't write A and the way we write in English. Mi madre es inteligente. Good. Now with estar, all I'm making with say. Now, please let's make a sentence with estar. Mi perro es muy bonito. Okay. Okay, good sentence. Mi casa está en Kolkata. Tú eres guapo. Okay, Radha. All those of not making, please practice it right now. It's good for you. Taj Mahal está en Delhi. No, Taj Mahal está en Agra. Oh, sorry. Sorry, sir. It's okay. Yo estoy mal. Okay, Saurabh, I am bad. Okay, this would mean that I am bad in terms of my health. मेरी health ठीक नहीं है. But if Yes, you sir. say yo soy malo और माला, suppose आप शेर के साथ लिखते हैं, तब हो जाएगा कि आप बुरे इंसान हैं. Okay? Yes. El tigre está en el zoológico, no estoy bien. Okay, Saurabh, this one is also means that मेरी तबीयत ठीक नहीं है. Okay? Tú estás mexicano. Pooja or mexicano. What do you want to say here, Pooja? If this means that you are Mexican, then this is a wrong sentence because you have to use the verb say that time, not estar. हम estar कब यूज करते हैं जब हमें लोकेशन बतानी है कि मैं मेक्सिको में हूँ. Yo hablo español. That is fine, देवांगना, but इसमें ser और estar दोनों ही नहीं ना. Yo estoy en el México. No, el की जरूरत नहीं है. Yo estoy en México. Nosotros estamos en la India. Okay, Ashna, good. Ellas están viviendo una vida rica. Good sentence, Yadav. Yo estoy hablando español. So all these sentences, जो last two है, they are present continuous. Am I audible? Yes, sir. Okay, there's some network issue. Okay, so where were we? ¿Dónde está el banco? Good. This is a question. ¿Dónde está el banco?
Asia es hermosa, mi amigo es muy guapo. Okay, cool. Let's move ahead. Shall we? Yes, sir. Perfect. Let's see once what do this talk about star. So it says they son ellos, where are they from? Como, to ask someone how he or she is doing, we use interrogatives como and auxiliary verb estar. So estar or conjugation example, como está means how are you, and the answer can be yo estoy bien, I am fine, or I am good. Next is the typical reply to the question is como esta or qué tal is muy bien gracias. Very well, thank you. Next, then we have think three or four people who you know and write their names, and you can use Spanish constructions. ठीक है, not so important right now, but you may practice all these at home. Let's do this. Play a part of Jorge. Jorge is the guy in the following dialogue and complete it. Let's do it right now. Let's do it right now. Did anyone raise the hand? Yes, Saurabh, go. Acha, you Sir, want to do it? where do we use ke tal? केताल मीन्स हाउ आर यू, एक तरह से क्या चल रहा है, व्हाट्सअप. Okay, sir. Informal way. जैसे हम मिलते हैं बोलते हैं क्या चल रहा है भाई, दैट्स केताल. Then, Informal sir, what is the conversation. difference between como estas and qué tal? Como estas is a bit formal and केताल is bit informal. Como estas में हम लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, ये भी पूछ सकते हैं, उसका मतलब ये भी होता है. Okay. Now when you are using the verb estar, तो मैं आपकी हाल चाल पूछ रहा हूँ, आप कैसे इंसान हो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ. If I ask what kind of person you are, I'll use the verb ser. Here I'm using estar because I want to know your condition. So, Okay. sir, when we want to ask about the person, we will say como es. Como eres? Como eres? Yes. Okay, hold a second. Are we done? Yes, sir. Let's ये move to सारे, the activity all work. the fill in the blanks, 1 2 3 4 5. Yes, sir. Okay, perfect. Let's have two students, one become Khorke and one become Lucy, and then practice a bit. Like this, you will practice. You'll be able to practice your spoken as well. Yes, Supriya, you may go ahead and become Lucia, and someone becomes Khorke. Shivansh, go ahead. Read. Buenos dias. Soy Lucia Emilio Pérez, Y2. नहीं, wait, it's not Y2, it's E2. Y को हम लोग E ग्रे का बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम E बोलते हैं, तो E2. Senor Shivansh, would you want to go ahead? Okay, Sir, Radha. Can I read, sir? Yes, Radha, please go. Okay. Buenos días. Yo soy Jorge. Muy bien. Lucia, continue. Encantada. ¿De dónde eres? Yo soy de India. ¿Y tú? Soy de Colombia. ¿A qué te dedicas? No, 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 no. It's a que te dedicas. A que te dedicas. Te dedicas.
Yo soy estudiante y No, नहीं, sir. profesor. अरे Right. estudiante नहीं हो सकता, नीचे का लाइन पढ़ो, लिखा है trabajo, I work. The Yo person trabajo en works la somewhere. Yo soy profesora y Okay. trabajo en la universidad. In trabajo in the universidad. All others, please mute. ¿Qué, Shivansh, please. qué casualidad? नहीं, que casualidad, que ¿Qué casualidad. casualidad? Yo también नहीं नहीं soy नहीं, wait. It's not t, it's not the. También, t or the. También. también soy profesora de español. Español. ए को आ बोलेंगे, español. Okay. ¿Y dónde trabajas? Y donde trabajas, very nice. Trabajo en Bogotá en el Instituto Caro y Curvo. अरे वाई होता है नहीं स्पेनिश में, ई. क्या Y राइट, इट Curvo. इज Trabajo and Bogota. Bogota is the capital of Colombia, and at Instituto Caro y Cuervo. Okay. Any other two students who would want to read? Saurabh, you go ahead, and Yes, Abhishek. sir, me. Okay, and whosoever speaks, please make sure there's no much noise behind you. Please go ahead, two students. Super fast. Sir, who is shall I? Go ahead, go ahead. Buenos días, yo soy Lucía Emilia Pérez. ¿Y tú? Buenos días. Soy Devangana. Muy bien. Actually, it's for Jorge, I guess. Yeah. You're Oh, doing sorry. it's about Jorge. Yeah, sorry. Yeah. Buenos días. Soy Jorge. Muy bien. Encantada. ¿De dónde eres? Soy de India. ¿Y tú? Soy de Colombia. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en empresa. Qué casualidad. Yo también soy profesora de español. ¿Y Okay. dónde? ¿Y dónde? Uh, I Trabajas. don't know what. ¿Dónde Okay. ¿De dónde? trabajas? ¿Y No. dónde trabajas? Trabajo en Bogotá en el Instituto Caro y Cuervo. Okay, so let's pay attention. When the person says Buenos dias, soy Lucia, Emilio Perez means they're telling the name. E2 means and you. So what is your name? So क्या बोलेंगे? We'll say either you say soy Jorge or you can also say me llamo Jorge, जो हमने अभी नहीं सीखा है. We'll learn later on. So we have learned, I guess. हाँ. Then next is encantada. Pleased to meet you. De donde eres? From where are you? आप कहाँ से है? The person says yo soy. No, whatever you can say. You can say soy de Portugal, soy de France, soy de India, soy de Australia, whichever country you want to write. Y tú and you, it says soy de Colombia. I am from Colombia. ¿A qué te dedicas? Means what do you do? So it says okay. So now pay attention. Before we write this answer, हम इसके नीचे का आंसर भी देखेंगे. उसमें बोल रहा है कि कासवालीदाद means वो क्या बोलते हैं वो उसे Coincidence, maybe. what What a coincidence. What a coincidence. También. So también means also. I also am a Spanish teacher. Maybe Spanish teacher who. तो जब वो बोल रहे हैं मैं भी, मतलब उससे ऊपर आंसर में भी उन्होंने भी बोला होगा दैट आई एम अ स्पेनिश टीचर. तो यहाँ बोलेंगे soy profesor de español. I am a Spanish teacher. Trabajo en la universidad. I work in a university. Okay, then say next is y donde dash. अब इसका नीचे आंसर देखेंगे. आंसर क्या लिख रहे हैं? आंसर बोल रहे हैं trabajo en Bogotá. I work in Bogotá in this institute. तो ऊपर क्या क्वेश्चन होगा? Where do you work? तो you work के लिए आ जाएगा trabajas. The answer will be y donde trabajas. Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? The answer would be trabajo en Bogotá en el Instituto Caro y Cuervo. Clear? Let's move ahead super fast. So this is the whole vocabulary that you can do on your own. I guess this includes more of nationalities and professions. So let's move to a la escuela. Means la escuela means the school.
So these are few vocabulary. Can someone just read it super fast? And no, wait, before we move ahead, let's see this. It's very important. Uh, okay, read from here. Observe. Wait, no. First you read this yellow box. Can someone read? Except the bracket. Bracket में जो लिखा है वो नहीं पढ़ना. वो English में. है. Can I, sir? Yes, please go ahead. Estudio en la escuela Obradoiro de Trujillo. En mi escuela hay una biblioteca, un comedor, unas aulas, una sala de profesores, un campus de fútbol, los laboratorios, una cancha de baloncesto Baloncesto. y Baloncesto. baloncesto y un gimnasio. Gymnasium. No, gimnasio. No hay una piscina. So it says, I study in the school. This is the name of the school. In my school, there is a library, a dining hall, some classrooms, a teacher's staff room, a football ground, two labs. Okay, labs. Una cancha de basketball, a basketball court, and a gym. There is no swimming pool. So it says observe the use of I. जो HAY है ना, HAY का ये दिख रहा है यहाँ पे, ये HAY. This is there also. यहाँ पे I una से पहले. So it says observe the use of I in the above context. In Spanish, when we refer to existence or non-existence of thing, we use the special verb haber. Present indicative क्या होता है इस verb का? I, HAY, which means there is or there are. It is used only in the third person singular form as impersonal or existential. For example, hay cinco estudiantes en el aula. There are five students in the classroom. Okay. Next. Yes. Sir, what's the meaning of abe? आबेर is a verb which means to have or to be. दोनों मीनिंग होते हैं इसके. बट हम इसका सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन करते हैं फॉर दिस करंट लेवल ऑफ योर्स. HAY इसका कॉन्जुगेशन होगा जिसका मीनिंग होता है देयर इज या फिर देयर आर. और आई एक अपने आप में वर्ब है. इसके आगे आप यू कैन राइट एनी नाउन दैट यू वांट टू. यू कैन राइट देयर इज अ कार, देयर आर 10 कार्स, देयर आर स्टूडेंट्स, एनीथिंग यू कैन राइट. आप कोई भी नाउन लिख सकते हैं इसके आगे. So this will become a sentence in itself. Example, you can write, in my house there are 3 rooms. So you will say, en mi casa hay 3 habitaciones. 3 is 3, habitaciones is rooms. Okay. Next example, it says, en mi mochila. Now mochila means a bag, a chota bag. Hay un estuche con 2 bolígrafos, una goma, un sacapuntas, 3 libros y 2 cuadernos. Means in my sachet there is a case with 2 ballpoint pens, an eraser, a pencil sharpener, 3 books and 2 notebooks. So it says, remember, I is not followed by a definite article except when it means to exist. Don't get confused with the verb estar, which is often to be located or to be present. You will learn more about the use of the two verbs in unit 17 of BSL 002, जो मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया in terms of estar का थोड़ा सा यूज. बट आप estar और I दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे BSL 002. Okay. So now let's move ahead super fast and see the meaning of these few objects. Can someone read all the objects at one go? Devangna, go ahead. Read all the objects. La pizarra, la tiza, la carpeta, el ordenador, la mesa, el pupitre, la silla, el horario, el reloj de pared, नहीं, reloj de pared, la mochila, el bolígrafo, los libros, el cuaderno, la lápiz, la regla, la goma de borrar, el lapicero, la sacapuntas. Perfect. Can someone, I guess सबके drawing बनी हुई है, समझ में आ रहा कोई? Is there any word which you are not able to make out? What does this mean? La goma de borrar. Eraser. Borrar is to rub. Goma is rubber. Okay, sir.
Let's move ahead. And sir, And what the is that? this one Lapicero? El reloj de pared. What? Okay, देखने में क्या लग रहा है, चलो बताओ आप. तो उसमें से सर दो वैसे वर्ड का मीनिंग बोलो. वॉल क्लॉक लग वॉल रहा है. क्लॉक. हाँ, तो वेरी The गुड. relo is watch. वेट, हाँ देखो, रेलोक मीन्स घड़ी एंड पारिस मीन्स दीवार. तो क्या हो ओके गया? सर. Wall clock. वॉल क्लॉक. नेक्स्ट. Lapicero? लापिसेरो क्या लग रहा है? पेंसिल ज्योमेट्री, मतलब वो पेंसिल बॉक्स. लापिस मतलब पेंसिल एंड लापिसेरो इज अ पेंसिल बॉक्स, नॉट अ ज्योमेट्री बॉक्स. El pupitre? बताइए क्या लग रहा है? पुपीतरे. वहाँ बेंच. पे bench. Okay. Actually, there is a bench. Sorry, there is table and chair both. So हाँ, तो वो I'm not बेंच able. टाइप का हो गया सर, प्रॉपर पूरा सेट. Okay. एनीथिंग, एनीवन एल्स? लेट्स मूव अहेड. Yeah, Perfect. sir, please. Okay, now let's move to the articles. अब स्पेनिश में there are two types of articles जैसे इंग्लिश में होते हैं. So let's learn all the articles right away. Very very important. इसी के साथ साथ फिर हम masculine feminine भी सीख लेंगे, because we should be knowing कि कौन सा object masculine और कौन सा feminine. Now let's move to articulous. Articulous is articles. So there are two types of articles. Definido and indefinido. अब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? ला, लॉस एंड लास. सेम गोes फॉर indefinite. Una, unos, unas. Okay, so अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, indefinite आर्टिकल कौन सा होता है? Will someone be able to tell me? The is definite article. A and are indefinite articles. ओके, सो जो एल, ला और लॉस और लास्ट, ये जो चारों वर्ड्स हैं, इन चारों का मीनिंग होता है द. आई रिपीट. Means the same. All the four words means the same thing, which is the, the, the. Okay, yes or no? But then we move to un and una. Un and una means a, and unos and unas means some. Please लिख लीजिए इसको. So can you please repeat? Un and una means a, unos and unas means some. उसका plural हो गया ना? Let me write it here. ये masculine हो गया. This is feminine. Then again masculine. Then again feminine. ये singular line हो गई. And this is plural. Okay. Okay. तो L का प्लूरल क्या हो गया? लॉस. और ला का प्लूरल हो गया लास. उनका प्लूरल unos and una का प्लूरल unas. Let's move ahead. Let me show in the book. Okay, so let's. Can someone please read the blue box? Please go ahead. Yeah, do you want me to read, sir? Yes, yes, please. Okay, from observar. Yes. Okay. Articulos definidos. The definite articles always precede the nouns and accurately determine people or objects. For example, masculine singular, el cuaderno, la mochila. Feminine plural, los cuadernos, las mochilas. As you see in the examples above, the definite article exists in two forms equating with the English form the and always correspond to the number and the gender of the noun.
masculine el and feminine la as singular, and masculine los and feminine la as plural. The plurals likewise in English as in Spanish end with s. For example, book, libro, books, libros. However, there always exist exceptions. There also are words that do not follow this pattern and end in a different letter. For example, el hombre, la mujer, el árbol, la fuente, el mar, el problema, el mapa, el sistema, etc. So all these below words इनको हमें याद करना पड़ेगा और जो ऊपर है वो लॉजिक से चलते हैं. That logic we'll see it later on again as well. So अभी के लिए हम we can learn one thing कि जो a ending words हैं वो feminine होते हैं और o ending words वो masculine होते हैं, except for the ones which are given there below in the list. So now let's do activity one with complete with L, la, los, las with definite articles. All these articles are definite articles. Let's do it right now. Either do 1 to 5 or do 1 to 10 all together super fast. We can also do first 5 and then rest at home. Okay, libro हो गया book. L libro is the book. Perfect. O ending है masculine है तो masculine singular लगाएंगे. Next, gomas. Las comas, Las gomas. Perfect. Next, trabajo. el trabajo, एल ट्रबाको. एल ट्रबाको का मतलब बताए कोई? the work, Job. टू वर्क. The work. द वर्क. टू वर्क तो त्राबाखार हो जाएगा, वो वर्क हो जाएगी. ये है एल ट्रबाको, ये द वर्क. ठीक है, बिकॉज वी कैन ओनली यूज आर्टिकल्स व्हेन वी यूज अ नाउन. आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ यूज हो सकते. नेक्स्ट, सेन्योर. el señor, El Señor. एल सेन्योर, वेरी गुड. प्रॉब्लेमा. el problema, एल प्रॉब्लेमा ऊपर ही हमने देखा एक्सेप्शन है. Now let's read the next one. Observer, indefinite articles. The indefinite article agrees with its noun in both gender and number. In English, we have a, an, or some, but in Spanish, we have un for masculine nouns and or una for feminine nouns as the equivalent substitutes. For example, mas singular, un estudiante, una estudiante. So un Feminine estudiante plural, is a male student and una estudiante is a female student. तो जो estudiante word है वो दोनों के लिए सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. okay, sir. Unos estudiantes, unas estudiantes. For some students, unos है तो मिक्स भी हो सकता है या फिर सब मेल हो सकते हैं, and unas में तो सब फेमिनिन होंगे. Next, let's see this. What do we have here? Again, also unos and unas, which translate to some or any in sense of under what is undetermined number of certain quantity. Example, unos hombres, a few man. Unos 50 kilos, some 50 kg. Remember to make plural of a word ending with consonant we add es. जैसे इंग्लिश में भी ऐसे ही करते हैं. तो ordenador becomes ordenadores. Let's do activity 2 super fast. A to D. Libros. Unos libros. Unos libros. Perfect. Amigas. Unas amigas, Amigas. Móvil. un móvil, Un- Un Un móvil. móvil. एक mobile phone. unos médicos, Unos médicos. Unos médicos. Some doctors. una chica, Una chica. A girl. unos cuadernos, un ratón, unas bibliotecas, Sir, what is raton? Raton, rat. Chua. Mouse. Next, write the plural forms. अभी हमने plural singular किया नहीं है. So once we'll come back to this again. So it says mi asignatura favorita, my favorite subject. So let's see how do we ask. ¿Qué asignaturas estudias? What subject do you study? तो यहाँ पे हो जाएगा yo estudio las matemáticas, las ciencias, el español, el inglés. I study math, science, Spanish, and English. So let's go ahead with the subjects. The first subject is el arte, the art, la música, the music, el coro, the choir, or the orchestra or the band.
Okay, and these are also the name of the subjects. Let's go through them, and give me a minute. I'm getting a call. So you read all these, someone. Okay. Los trabajos manuales, la computación, la informática, la mecanografía, la moda, la física, la química, la biología, la historia, la geografía, la economía, la geometría, el álgebra, la contabilidad, el español, el francés, el italiano, el alemán, el ruso. Okay. El inglés or la literatura. So let's see. Do you understand all the meanings, or is there something I should explain? What is la moda? Model. Dress. नहीं Model, sir. लिखो. नहीं नहीं लिखो. La moda means fashion. Fashion, it's fashion. Yeah. Okay. What is contabilidad? Bill, sir. Accounts, The bill. accountancy, Accounts. So accounts. contabilidad, the word comes from contar. Contar is to count. तो जो count रखता है सब चीजों का वो होता है accounts. तो contabilidad is accounts. Sir, I have a doubt that why do you have written last sciences? Sciences. But the translation says science. हाँ, बिकॉज हम नेचुरल साइंसेज की बात कर रहे हैं. सोशल साइंसेज होता है, सोशल साइंस नहीं होता. बिकॉज देयर आर मल्टीपल साइंस. आप देखो ना यहाँ क्या लिखा है, ला सिएंसिया सोशियालिस, बिकॉज 3 हमने लिखी हैं, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सोशल On साइंस. the previous page, sir. On the previous page. हाँ, उसका रीजन बता रहा हूँ ना. आप ये देखो ना, ऊपर क्या लिखा है, ला सिएंसिया सोशियालिस, मतलब सोशल साइंसेज. हमने 3 मेंशन करी है, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक इकोनॉमिक्स. तो जो हम तीनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, ला सिएंसिया सोशियालिस, सोशल साइंसेज. इसलिए आप नीचे देखेंगे हमने लिखा है मैथमेटिक्स, लास्ट मैथमेटिकास, बिकॉज हमने 3 मैथ्स नीचे लिखी हैं, एक ज्योमेट्री, एक अलजेब्रा और एक अकाउंट्स. तो हम तीनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिकास. Okay, sir. जैसे मैथमेटिक्स हम लोग इसको बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी गॉट लास्ट लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब क्या हो गया, लैंग्वेजेस और लोस इडियोमास, दोनों वर्ड्स हैं लैंग्वेजेस के. तो हमने क्या क्या बोला, एक हो गया एस्पानियोल. व्हाट इज एस्पानियोल? Spanish. स्पेनिश, एल फ्रांसीस, फ्रेंच, इटालियानो, इटालियन. देन वी गॉट आलेमान, जर्मन. देन वी गॉट रूसो. German, Russian. Russia, Russia. Exactly. And then English is English. Okay. Let's move ahead. Sir, in the last part, el inglés, la Wait, something is literatura. happening in this file. Wait, अपने आप चल रही है. I'm not doing anything. Wait. हाँ, please बताइए. Yes, go ahead. On page 42, sir, at last it's written el inglés and then there's a La slash literatura. la literatura. The literature. Uh, here is the literature shown the part as part of English, or No, we can say literature as is normal literature also. Any literature is literatura, not just English literature. no, sir. In this part, actually, I was asking that we can use literature as the word of English only. No. Okay. English is English. That's a different language. Literature can be, we can use literatura de español or literatura española. Spanish literature also is literature. I guess I need to close this file and open it again. सर पेज नंबर 36 पे देखना, लास्ट एंडिंग में कोएवर का मीनिंग क्या हुआ? नाम है पूरा नाम है इंस्टीट्यूट का. ओके सर. Okay, so okay, identify the name of the subjects following. Example animals हम किस में पढ़ते हैं, साइंसेज में पढ़ते हैं. पिंताल means to paint. पेंटिंग किस में पढ़ते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं. Okay, you can do this at home. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Next, then let's move with the dialogue. It says, ¿Cuál es tu asignatura favorita? Which is your favorite subject? It says, Mi asignatura favorita es la música. My favorite subject is the music. Next is, ¿Qué asignatura estudias los lunes? भाई मंडे को आप क्या पढ़ते हैं? The answer can be los lunes estudio las matemáticas. Mondays ko I study maths. Next, then we can also express opinion about our favorite subject using the following sentence structure. Framing structure क्या है? La geometría, the geometry es muy interesante, is very interesting. Or you can say la geometría no es fácil, it is not easy. You can write any. So अब if you pay attention, ये सब descriptions है, ये सब आप describe कर. Oh wait, am I not sharing the book? Wait. So if you pay attention, you will observe कि हमने जितने भी सब है ये सब description है, इसलिए हमने share use किया है. Okay? We have used the verb share. चाहे हम उसको करने को बोल रहे हैं या फिर या तो बता रहे हैं या फिर वो डिनाई कर रहे हैं. तो ओके, सो एक चीज हम यहीं पे सीख लेते हैं. वन मोर थिंग, हाउ टू नेगेट अ सेंटेंस. एक सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्लीज नोट कर लेंगे इसको. नोट लिख के दैट टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव वी जस्ट ऐड अ नो बिफोर द वर्ब. करेंगे वी ऐड अ नो जस्ट बिफोर द वर्ब, वर्ब से जस्ट पहले. Okay, so you can make a sentence, make two sentences right now. Example लिखा, mi asignatura favorita es el español porque es muy fácil. My favorite subject is Spanish because it's very easy. Next is la asignatura favorita de Ricardo es el inglés. Y es muy interesante. Ricardo's favorite subject is English and it's very interesting. Clear? Sir, is there any place where we can get the audio sessions like it is mentioned track? सर ने क्या कहा था, कहाँ पे ऑडियो? Anyone? Google Classroom. Google Classroom में you will have it, the audio. Okay, please have the access from there. Okay, sure, thank you, sir. Thank you. So, are we ready to move? Yes, sir, please move. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, please go ahead. Okay, then we move to the verbs. Acha, now let's come to the verbs. AR, ER, IR ending verbs. And then the timetable. And the time भी है क्या इसमें? नहीं, time नहीं है, days, months है. ठीक है, let's do it super fast. उस दिन हम, I guess that day we did the conjugation of the verb trabajar. Yes or no? So trabajo से हमने सीखा था Yes, o sir. as, if you remember हमने सीखा था o as a amos aisan. I repeat, o as a amos aisan. ये यहीं लिखा है if you see the blue color का table. O as a amos aisan. So that's how we conjugate or any AR verb, any regular AR verb. Example, the verb is hablar, means to speak. तो conjugation क्या हो गया? Hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. I repeat, hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. क्लियर? तो आबलो हो गया आई स्पीक, आबलास हो गया यू स्पीक. इनफॉर्मल, आबला हो गया यू स्पीक. फॉर्मल, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स. आबलामोस, वी स्पीक. आबलाइस, यू ऑल स्पीक. एंड आबलान हो गया दे स्पीक, मैस्कुलिन फेमिनिन बोथ. और यू ऑल फॉर्मल स्पीक. क्लियर? So these are the examples. Yo hablo inglés, portugués, español, ruso, chino, francés, italiano, alemán, árabe. These all are languages. Then question can be, tu hablas portugués? Do you speak Portuguese? Then the answer is sí, hablo. Yo hablo. Yes, I speak. No, no hablo.
तो पहले वाला नो में वो मना कर रहा है, एंड सेकंड वाला नो जो वर्ब से पहले वाला नो है. ओके, आई डोंट स्पीक, तो नो के लिए अलग है और डोंट के लिए अलग नो है. देयर आर टू नोज दे हैव पुट. एंड नेक्स्ट इज habla es wait hablas español muy bien, you speak very well Spanish. Next verb would be estudiar, same conjugation. Estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiais, estudian. I guess we have done it. So yo estudio is I study, or estudio is also I study. This I have told you that you can skip yo. Okay, I have told you this point. Next, ellos hablan, nosotros trabajamos. All these verbs can be done. If you wish, I can send you a list of the basic verbs that you should be knowing at this level. Please, sir, do that for us. फिर क्या है, some more examples. Comprar is to buy, enseñar is to teach. Let's see the examples. Yo compro billete para la película. I buy a ticket for the movie, for the film. El profesor enseña el español muy bien. The teacher teaches Spanish very well. बहुत अच्छे से स्पेनिश पढ़ा रहे हैं. ओके, फिर अब कॉन्जुगेट करके हम लोग एक्टिविटी 6 वी कैन डू एट होम. ओके, Yes, sir. तो ये घर पे कर लेंगे. इसमें क्या करना है, इसमें जो ब्रैकेट में दी है उस सब्जेक्ट के हिसाब से टू कॉन्जुगेट द वर्ब एंड मेक द Verb होल को सेंटेंस. conjugate करना है. Yes, sir. Okay. सेम विद सेवेंथ, वर्ब ब्रैकेट में है और जो सब्जेक्ट है वो ब्रैकेट से ब्लैंक से पहले है. यू हैव टू कॉन्जुगेट द वर्ब एंड पुट इट इन द ब्लैंक. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द ईआर वर्ब. अब ईआर वर्ब और एआर में सिमिलरिटी ये है कि पूरी की पूरी कॉन्जुगेशन सेम है. जहां जहां पे ए था वहां वहां पे ई हो जाएगा. So this becomes OSA, amos, ace, n. I repeat, OSA, amos, ace, n. So the verb is comer. So it becomes como, comes, come, comemos, comes, comen. Shall I type it? Yes, sir, please. ठीक है. Let me show. मैं एक बार तीनों एक साथ सिखा देता हूँ फिर. यहीं से कॉपी कर लेंगे. Okay. So estudiar, AR verb हो गई. Now let's see comer. Comer means to eat. कुछ खाना. So this becomes como, comes, come. This is comemos, comeis, and comer. ओके, तो हमने क्या किया, जहां जहां ए था वहां वहां पे ई कर दिया. नाउ लेट्स सी आईआर एंडिंग वर्ब. द वर्ब इज vivir, to live. This would be vivo, vives, vive, vivimos, vivis, viven. तो यहाँ पे we'll just pay attention on the nosotros and vosotros का फॉर्म. रेस्ट एवरीवन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. जैसे ER में था IR में सेम है, एक्सेप्ट फॉर द nosotros and the vosotros का फॉर्म. I hope I am clear. Yes, sir. Okay, so let's conjugate 3 verbs right now. हम अभी 3 verbs conjugate करेंगे. You all should do it by writing it in a notebook. First is comprar. Next is beber. Third is escribir. Do it right now, and with the meaning also, and if possible, make a sentence as well. So 3 conjugations with 3 sentences.
Saurabh, I just saw the sentence that you made in the chat box. You have written la historia no es mi asignatura favorita porque es muy aburrido. इसमें दो मिस्टेक्स हैं. Porque में ई के ऊपर एक्सेंट नहीं आएगा. सेकंड इज aburrida होगा because it's historia feminine है. Okay, sir. Okay. Tú compras una ropa. You buy a cloth. Okay. Yes, sir. बट आप ना ये नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं, आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं. ऑर्डर कमांड के लिए अलग टेंस होता है. Okay, sir. Next. I hope you are conjugating in your notebook. Sir, I have conjugated, or please once correct it if I'm wrong. Read. Compro, compras, compra, compramos, comprais, compran. ठीक है, cool. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, beben. Okay, next. Escribo, escribes, escribe, escribemos, escribis, escriben. Escribimos. Okay. Escribimos. हाँ. Yeah, okay, yeah. Thank you, sir. थिरुमलाई लागवा की स्पेलिंग गलत है एंड दिस इज फ्रेंच दैट यू हैव रिटन. लागवा ऐसे नहीं लिखते. लागवा होता ही नहीं कुछ. एल लागवा होता है. तो वे लेचे तो वे सागवा एल बेबी हुमो de naranja. Okay, Deshi, good. Sir, in comprise, the accent mark will come on A or I. ए आर वर्ब है ना, तो ए पे आएगा. Okay, जो sir. एंडिंग वाला वर्ब है उस पे रहता है. Escribo en español. ठीक है, I write in Spanish better है. I write Spanish also. Both are fine. Different meaning. Yeah, but this on top of Espanol N, I'm not getting the accent in the. That's fine. That's okay. Your if you have a Mac, if anybody has a Mac laptop, उसमें अगर आप N को दबाए रखेंगे तो आ जाएगा. For Windows, you have to find the shortcut key. Shortcut key available है. आप नेट पे ढूंढेंगे, you'll find it. Sir, I'm telling my sentences. Please have a look. Yo compro el mapa. Tu bebes Hugo. What is Hugo? Juice. Sumo or Hugo? Sorry. Hugo. Okay. Nosotros escribimos el correo electrónico. ठीक है. Ok, tú escribes español, do write Spanish, ठीक है. Nosotros escribimos conjugación del verbo de español. Verbo कुछ नहीं होता, del verbos de español होगा. आई के बेबे रागवा. दिव्या, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ये सेंटेंस आई का है, ये बेबेर का सेंटेंस नहीं है.
वेट भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये सब जो इंटरनेट यूज करके सेंटेंस बना रहे हैं वो सब गड़बड़ी है। आशिक सेज quiero beber té y comer un pastel. Ashik, you got to understand one thing. आपने लिखा है I want to drink tea and eat a cake. But the problem is ये सेंटेंस want का है, ये बेबेर का सेंटेंस नहीं है। बेबेर का सेंटेंस Yes, वो sir. होगा Okay. जिसमें आप बेबेर को कॉन्जुगेट करेंगे। आप वो चाह रहे हैं, आप वो कर नहीं रहे हैं। ओके, तो चाहना एक अनदर वर्ब होती है। सेम विद quiero aprender español idioma. ये भी गलत है। यू वांट टू लर्न, आप सीख थोड़ी रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो ये चाहना वर्ब हो गई querer. सुप्रिया राइट्स tienes que comprar frutas, you have to buy fruits. आप खरीद नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको खरीदने चाहिए। ओके, तो दिस इज अ सेंटेंस ऑफ tener बिकॉज आपने tener को कॉन्जुगेट किया है, ना कि comprar को। सेम विद सुप्रिया अगेन, deberéis beber mucha agua, you should drink more water. you should में should को कॉन्जुगेट किया है, क्योंकि शुड ही कॉन्जुगेट होगा बिकॉज वो सेंटेंस ही ऐसा है। यो सोई बेबेर लेचे। रजत, यू आर कॉन्जुगेटिंग शेर वर्ब। शेर और बेबेर साथ में आ ही नहीं सकते। आई एम ड्रिंक वाटर और मिल्क कोई मतलब नहीं है सेंटेंस का। बेबेस लाते। ओके सौरभ, दिस इज फाइन। ड्यू ड्रिंक ट्री। अदर्स मेक इट सुपर फास्ट। Sir, can you please बेबेर repeat? मुचा आगवा नहीं सुप्रिया, इसमें तो आपने कॉन्जुगेट ही नहीं किया। Sir, can you please repeat? आपने क्या बताया? शेर और क्या How साथ में? will I say that I will buy something or तो he विल तो will buy फ्यूचर टेंस or हो I गए am ना। buying? आप समझो, अभी हमसे प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं, ये सब आप बाकी सब अलग अलग कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। अभी हमसे प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। दिस इज द प्रेजेंट टेंस दैट, ये कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस की है, ना कि फ्यूचर की और कंडीशनल की और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसी की नहीं है। इसमें सेंटेंस होगा आई ड्रिंक वाटर, खत्म। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई विल ड्रिंक Sir, वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर, सब बाद में। I buy notebook. हाँ ठीक है, देखो आई बाय नोटबुक एवरी वीकेंड, क्या हो गया? सेंसलेस है बट ग्रामेटिकली ठीक है। सर, कैन यू प्लीज रिपीट? आपने क्या बताया? शेर और क्या साथ में नहीं आ सकता? शेर और वो कोई और वर्ब साथ में नहीं है ना। आप दो वर्ब को साथ में भी लिख सकते हैं, बट शेर मतलब आई एम हो गया। अब एम के बाद या तो हम स्टूडेंट लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली या ऐसा कुछ लिखेंगे। ओके ओके, तो आपने लिखा है आई एम के बाद आपने वर्ब डाल दी, वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। ओके ओके, गॉट इट। वीगन, वीगन व्हाट इज दिस एसवीबीएन दो, यू आर राइटिंग, आपने ये लिख दिया था टाइम राइटिंग। Yes. Are you the same student which was there in the last one, I guess? Being vegan, नाम Uh, से ऐसा कुछ? yes. In the Huh? first session First session, that yeah. you started earlier. Yeah. Mhm. Okay. Did you appear for the exam? Sorry? Did you appear for the exam? No. I'm appearing in January. Okay. I joined in July itself. Okay. Yo escribo una poema. ठीक है। Let's move ahead. चले? Sir, I want to frame a sentence that I don't know how to write a poem. So, I don't know how to write a poem. ये सब लिखना है या फिर poem word नहीं आता? नहीं सर, यही लिखने के लिए तो मैं कैसे लिखूंगा? अभी आपको I don't नहीं आता, no नहीं आता, write नहीं आता, how नहीं आता, तो कैसे लिखेंगे? अभी नहीं लिख सकते। Okay. अभी आप लिख सकते हैं I write a poem, बस। Okay, sir. Yo escribo una poema. अच्छा, तो अभी what I'll do is for you, only for you guys, only and only for you guys, I'll put across the basic verbs जो आपको इस टाइम आप याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएंगी। ओके, AR, ER and IR verbs. I'm sharing, you may take a screenshot or I don't know how can I send you, if I can send you. Okay, ये regular AR verbs हैं, ER and IR verbs. Please check. Sir, I have joined late, so please explain. Is it different for AR and IR web, the conjugation or same? Yes, आप अपनी बुक का पेज नंबर खोल लीजिए।
दिस इज 46. तो आपको वहां तीनों वर्ब्स की Okay, sir. कॉन्जुगेशन दिख जाएगी, ओ ए आर ई आर एंड आई आर वर्ब्स. Sir, can you send these things to one of us, and we can actually share it in the WhatsApp group we have? Yes, what do you want me to do? Please repeat. You want me to send this? Easy है Yeah. ये तो, अभी कॉपी पेस्ट अभी करके डाल दे क्या चैट पे, if you can copy and paste. Let's see, I don't know. आ गया चैट पे. Sir, may I ask one? Sir, did you cover the irregular verb part already when I was not attending the beginning of the class? इरेगुलर वर्ब तो अभी पढ़ा ही नहीं है. Okay, okay, sir. Okay, अभी तो रेगुलर भी हुई है. okay, sir. Okay, thank you. I've pasted all the verbs in the chat box. You may. Thank you, sir. Okay, let's move ahead. Yes, sir. ठीक है. So देखो, I'll tell you first thing. ये तो अभी regular verbs हैं, AR, ER, IR ending verbs. I guess this must be somewhere around 40 verbs. कोई गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 somewhere around 31 के करीब ये हैं और 9-10 ये हैं, तो 40-42 के करीब verbs हैं. You can do these verbs and I'll tell you a trick which can help you in increasing your vocabulary. Shall I tell you? Sir, 1 day per word with अरे 3 नहीं, words. अरे वो पुरानी बात है, मैं एक बात थोड़ी करूंगा हर क्लास में. ठीक है सर, मुझे लगा आप भूल गए कि आपने करी थी इसमें. नहीं नहीं, मेरे को सब याद है. ओके सर. सर न्यू ट्रिक सर. दे दे न्यू ट्रिक, न्यू टिप. जो करेगा वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं करेगा वो वहीं रह जाएगा. ओके, फर्स्ट व्हाट यू डू इज आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए स्पेनिश वर्ड्स सिमिलर टू इंग्लिश. क्या बोला मैंने? स्पेनिश वर्ड्स सिमिलर टू इंग्लिश. Similar to English. हाँ, तो आपके पास ऐसे 1000 वर्ड, 2000 वर्ड, 500 वर्ब्स, 500 ऐसा सब आ जाएगा. नीचे नीचे लिंक ढूंढते रहिए या फिर सर्च ही करिए 500 सिमिलर वर्ब्स इन स्पेनिश टू इंग्लिश, ऐसा कुछ. ओके, या 500 या फिर 50 कर लो अभी तो, 50 स्पेनिश वर्ब सिमिलर टू इंग्लिश. तो उसमें क्या है, उसमें आपका बहुत काम बच जाएगा. यू विल सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम. व्हाई? बिकॉज मीनिंग आपको पता है. आपको सिर्फ ये जानना है कि एग्जिस्ट करती है. एग्जाम्पल, एक वर्ब है एंट्रार, मीन्स टू एंटर. सेम है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा. ये एंट्रार, एंटर सुनने में लग रहा है, तो हमें मीनिंग भी समझ में आता है, हमें प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आती है. हमें सिर्फ उसको पता करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है. तो जहां पे हमें एक वर्ड के लिए 3 काम करने पड़ते हैं, वो 3 काम क्या है कि हमें पहले तो उसका स्पेलिंग आना चाहिए. चलो स्पेनिश में अगर प्रोनाउंसिएशन भी आ गई तो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सेकंड काम क्या होता है, वी हैव टू लर्न द मीनिंग. जैसे अबरीर है, एक नई वर्ब है अबरीर, टू ओपन. समझ गए? तो वो हमें याद करना पड़ेगा भाई, आबरीर इज टू ओपन, आबरीर इज टू ओपन. तो वो वाला काम तो हमने हटा दिया. हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये सेम वर्ब एग्जिस्ट करती है इंग्लिश में भी. एग्जाम्पल, विजिटार इज टू विजिट. तो विजिटार की स्पेलिंग सेम है, बस ए आर लग गया आगे, तो वो
टू विजिट हो गया, इसमें हमारा लर्न करने का टास्क कम हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे व्हाट आई मीन, या Yes, दोबारा Yes, समझाओ? sir, got it. Yes, sir. Yes. सर Yes, sir. STDR की तरह हो गया ना, आई डिडंट गेट यू। S2DR हाँ, एस सर टू डी आर, सिमिलर। टू स्टडी। हाँ ठीक है, सेम हो गया। समझ रहे? तो अब आप रेसिबीर, टू रिसीव, देखने में ही सही लग रहा है। भारत प्लीज डोंट टाइप व्हाट इज दिस एरिया आरिया। हाँ, ये सब, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे स्पेनिश वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में सेम है। एक्टर, आक्टोर, एडमायरेबल, आदमिराबले, एनिमल, एनिमल। तो अब अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आपको कम से कम 500-600 वर्ड ऐसे ही याद हो जाएंगे। समझ रहे हैं? मैं सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, वर्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ब्स आपको 50-60 तो मिल जाएंगे अभी इस लेवल पे भी। तो इसको बोलते हैं रातों रात अपनी वोकैबुलरी डबल करना। क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं करना, वो आपको याद है, वो आपको पता है। ओनली द नॉलेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज लर्निंग। आई रिपीट अगेन, कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इतना पता करना ही आपकी लर्निंग हो जाएगी। ओके? क्योंकि जो Yes, मैंने sir. हमने इंग्लिश में कभी करी है वो अब स्पेनिश में यूज हो जाएगी। क्लियर? So if I was you, I will look for words and I'll write them in my notebook, और ऐसा एक शीट बना के उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको टिक कर लेंगे कि हाँ ये हमने पढ़ लिया, ये हमें आ गया, ऐसा। क्लियर? यस सर। तो जो आपने मेहनत कभी इंग्लिश में करी थी लाइफ में, वही मेहनत आप स्पेनिश में काम आ जाएगी। Sir, इफ यू may डू I इट ask? सीरियसली। यस प्लीज गो अहेड। Hello, sir. गो अहेड, गो अहेड। आशिक, गो अहेड। I don't know if I'm audible or not. सर Yes, मे बी Abhishek. कनेक्शन। Yes, you're audible. एक तो इसका नाम भी ऐसा ना, दो बार बोलो आशिक तो ऐसा थोड़ा। यस अभिषेक। Yes, sir. Sir. यस Sir, गो अहेड। you are not audible. Sorry, I had a हाँ, problem. So the what? question is, if I am saying a sentence with kero vivir, then the thing is like the kero has already been conjugated. So the next thing vivir has to be conjugated or not? No, it won't. But then this is a sentence of querer, not vivir. एग्जाम्पल, Okay, sir. अगर मेरे को हिंदी में सेंटेंस बनाना है खाना, मुझे खाना, मतलब मैं खाना 2 बजे खाता हूँ सपोज, तो वो अब हो गया ये खाना खाना। बट मैं खाना खाना चाहता हूँ तो ये चाहने का सेंटेंस हो गया ना, खाने का सेंटेंस थोड़ी हो। दैट्स अ सेंटेंस ऑफ टू वांट। आई वांट टू ईट फूड एट 9 o'clock। तो ये सेंटेंस वांट का है, ईट का नहीं है, बिकॉज मैं वो एक्शन कर रहा हूँ, मैं वो चाह रहा हूँ। द एक्शन, द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज टू वांट, नॉट टू ईट। ईट का सेंटेंस हो जाएगा आई ईट माई फूड एट 3 o'clock। तो ईट का सेंटेंस वो होगा। Could you please drop the link of WhatsApp group here? I don't have any group, Shreya. It's between the kids. सर इन आशिक सेंटेंस सर इस सर जो विवीर है वो एज इट इज यूज हो गया, वो फुल चेंज वर्ब नहीं यूज हो गई। वो आप समझो। चलो चलो, लेट्स ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। हम लोग वर्ब को कॉन्जुगेट करते ही क्यों हैं? कौन बताएगा? सर वही तो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्जुगेशन नहीं हो तो ऑब्वियसली वो कैरियर का ही अरे सेंटेंस, पहले बताओ सेंटेंस को कॉन्जुगेट क्यों करते हैं, और एक वर्ब को। ताकि वो सेंटेंस में सुटेबल हो। नहीं, ठीक है बात। हमारी ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। इफ यू गो टू स्पेन राइट नाउ, अगर हम अभी स्पेन जाते हैं, हमें बहुत सारे इंडियन ऐसे मिल जाएंगे जो पता है कैसे बात करते हैं। वो बोलते हैं यो एस्क्रिबीर कोर्रेओ। अभी किसी ने बनाया था सेंटेंस, तो वो फुल वर्ब लिख देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेनिश नहीं पढ़ी बैठ के, वो किसी तरीके से स्पेन पहुंच गए, एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन स्पेन। एंड वंस दे डू दिस, दे डोंट फॉर्मली लर्न द लैंग्वेज। सुन के, देख के, बोल के, पढ़ के, दे लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ। And once they learn a lot of stuff, so they don't know what conjugation is. तो वो बोल देंगे yo escribir matemáticas, yo aprender español। और प्रॉब्लम इसमें एक ये है कि स्ट्रक्चर खराब है, बट अच्छी बात ये है कि मीनिंग समझ में आ जाएगा सामने वाले को। तो वंस द पर्पस ऑफ द लैंग्वेज इज बीइंग सॉल्व्ड, नो वन क्वेश्चंस। फिर कोई कुछ नहीं उठाता कि आपने ये गलत क्यों बोला, ये कॉन्जुगेट क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो एयर वर्ब था, आपको ओ बोलना चाहिए था, अरे आपने नहीं बोला। नो वन डज दैट। I should not say, but whenever you see a Bengali who has not learned Hindi formally,
tries to speak Hindi, तो वो बोल देता है मैं यहाँ जा रही हूँ. A guy might also say it. तो आप उसको हर बार करेक्ट नहीं समझोगे. You will understand कि वो वैसा ट्रेनिंग नहीं हुआ है. So you will understand the sentence, and once you understand the sentence, you will not feel bad about the language, or you will not feel that the person is speaking it wrong, क्योंकि आपको मीनिंग समझ में आ गया. If there are two verbs, the first is conjugated and second is always infinitive. Not always infinitive, Thirumalai ji. No, not at all. इस लेवल पे yes, आगे जितना जाते रहेंगे no. Because जब आपको बोलना होगा I have been eating और I have been studying Spanish, तब नहीं होगा. तब तीनों verb conjugate होगी. I के बाद have been studying, तीनों verb conjugate होगी. तो ऐसे रूल्स अपने आप नहीं बना लेंगे. एज ऑफ नाउ के लिए दिस इज फाइन. कंडीशनली दिस इज ओके, बट ये हमेशा नहीं. ओके तो अभी हम ये सीख लेते हैं कि whenever we are using two verbs together, we'll conjugate the first one, second one full verb. बट ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है. प्रेजेंट टेंस में यस. क्लियर chicos? Yes, sir. Shall we move ahead or there are more questions? So let's move. Sí, señor. Okay, perfecto. Vamos a adelantar. So vamos a adelantar means let's move ahead. Adelantar, adelanto is ahead. Vamos means let's. Let us move ahead. Sir, vamos, let us go. Sir, the gender works like in Hindi, in Spanish, or just like the way if you Wait a minute. Yes, chicos. Senor, my question was that the gender, like where to use the R sound or O sound in the verbs while saying, is like Hindi or this has a different rule. No. Gender का verb से कोई लेना देना नहीं है. There's no relation between the gender and the verb. Verb conjugation will go normally as for masculine, feminine. Example, if I am a boy, I'll say yo estudio español. If I'm a girl, I'll say yo estudio español. Both are perfectly right. So there's no relation between the gender and the verb conjugation. But there is a relation between gender and the noun and the adjective and the pronoun and the possessive and other things. Verb का कोई relation नहीं. Verb का कोई rule नहीं है, कोई relationship नहीं है. It's totally unrelated. कुछ लेना देना नहीं. Okay, let's move ahead. So we were here somewhere that you write OR, AR, ER. ये हमने कर लिया सब. We have done this. So you can do activity 8 at home. Okay, let's do a small फटाफट से quick reading to it. There are two small what do you call introductions of people given. So today is the day when we would be doing this. Let me see how much of this is left. Okay, counting thin air. Okay, we can do this in the next class. Okay. So today what we'll do is today we'll spend now a lot of time in presenting ourselves. So let's have two students reading this first, and then हम लोग अपना introduction बनाएंगे आज. Okay, आज हम अपना introduction बना देंगे. Let's have someone reading it. Saurav, go ahead. Then Abhishek. So the first one. Me llamo Kiran y soy de la India. Tengo 12 años. 12 años y estudio en un colegio público. Wait, it's colegio. Sorry, sir. Colegio público. Hablo Hindi e English. Sir, why is it written E? E means and. But it's E. E letter. Acha, E. I'll explain you later. Okay, sir. English. Mi asignatura favorita
es matemáticas. हम्म Mi mejor amiga नहीं, se मेयोर नहीं, llama. मायोर मायोर। आपको ए को आ ही बोलना पड़ेगा ऑलवेज। Okay, sir. और दिस इज मेखोर। Okay, sir. Mi mejor amiga se llama Anita. Tiene 12 años. Tiene una mascota que se llama Rocky. So mascota is pet. मास्कोता इज अ पेट। ओके, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट प्लीज। Hola, Hola. ¿qué tal? Me llamo Ricardo, soy peruano y tengo 11 años. Estudio en un colegio privado de Trujillo. Hablo español y quechua. Am I right, sir? Quechua. It's Quechua. 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 K. Queek. Okay, wait. Can you please ask the doubt again? Yes, sir. I was asking about Quechua. केचुआ, केचुआ इज अ लैंग्वेज जो हमने उस दिन पढ़ा था ना, दैट वाज देयर इन द फॉर आई गेस द कल्चरल पार्ट में हमने पढ़ा था। केचुआ एक लैंग्वेज आती है, जब मैंने कहा था दैट द अदर लोकल लैंग्वेजेस ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इम्पैक्ट स्पेनिश, तो वहां पे केचुआ वर्ड आया था। सो केचुआ इज अ लैंग्वेज स्पोकन इन आई गेस अर्जेंटीना और मेक्सिको, आई गेस समवेयर। Mi asignatura favorita es el arte. Mi mejor amigo se llama Pedro. Tiene 10 años. वो ओके 10, अभी हमने काउंटिंग नहीं पढ़ी, नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। प्लीज गो अहेड। Completed, sir. नेक्स्ट। एनीबॉडी एल्स विशेस टू रीड? No one. Chalo, let's move ahead then. So right now what I'll do is I'll teach you counting till 100 so that you can write up your introduction. ठीक है, फटाफट से इंट्रोडक्शन वो काउंटिंग देख लेते हैं। So what is counting in Spanish? Los números with accent on you. Números. Okay, please pay attention. Uno, dos. Is he audible? Sir, unable to hear you. Maybe there is some network problem. I guess I lost some connection. Am I audible?
Yes, sir. You are audible now, sir. Yes, Okay. now audible. So we were 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. This is till 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and then 20. 20 is 20. 20. Okay, so at few places or with few people you will also listen 20. वो ब भी बोलते हैं वर्क को, तो 20 भी सुनने को मिलेगा आपको. So don't be surprised कि ये क्या बोल दिया. So this is 21, 22, 23, 24, 25. ये एक ही वर्ड है, ठीक है. 26, 27, 28, 29, 30. 30 मीन्स 30. अब 30 के बाद से काउंटिंग का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? E1. 31. ओके, 32 हो जाएगा. 32. 20. ठीक है. अब ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक है. Sir, can you show from 20, please? हाँ, I'll send it to you. ये 20 है. This is 20. बुक में सब होगा, आई एम श्योर. ठीक है. इसमें यहाँ पे एक्सेंट है एक जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह. इसमें एक देसी साइज में भी होगा. रेस्ट बस, इसके अलावा कहीं एक्सेंट नहीं, पूरी काउंटिंग. तो अब हम सिर्फ 30, 40, 50 याद करेंगे और हमारा काम हो जाएगा. Last 100 is CN. ओके, तो एग्जांपल 55 हो जाएगा 55. 98 हो जाएगा 80, 98 85 हो जाएगा 85. सो सिमिलरली बस ई लगाएंगे. ई मतलब एंड होता है, तो 70 and 5, 60 and 3, 80 and 2, ऐसे चलेगी काउंटिंग. Am I clear? Yes. Sir, one doubt, sir. बताइए क्या डाउट है. We add and only for 20? नहीं, आफ्टर 30. After 30. हाँ, उससे पहले इट्स वन सिंगल वर्ड. Thank you, sir. इफ यू गो बैक 15, 20, 30, 40 years ago, तब ये अलग अलग था. तब आपको कई बुक्स में मिलेगा, बहुत पुरानी बुक्स होगी तो 21, 22. बट देन व्हाट हैपेंड वाज 20 के आगे ई की आवाज आती है, फिर आगे ई की आवाज आती है, तो उन्होंने एक ही वर्ड कर दिया 21. दैट्स द एक्चुअल लॉजिक. पहले ऐसा नहीं था, अभी हो गया. तो 21, 22, 23. नहीं समझ में आया? एक्सप्लेन्ड. यहाँ 20 आ गया, फिर ई लिखा, फिर उनो लिखा. तो अब ए और ई को उन्होंने एक ही वर्ड करके 21 कर दिया, तो 21 हट गया. कुछ बुक्स में, बहुत पुरानी बुक्स में अभी भी है, बट देन दैट्स पास्ट, फॉरगेट इट. राइट नाउ इट्स 21, 22, 23, और 22, 21, 23, एंड देन कम्स टू 30, 31, 32 टिल 99 तक. ओके, तो यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे. 31 to 99 we use E. ठीक है, हम लोग E यूज करते हैं 31 से लेके 99 तक. Sir, can you show it from 40, please? Yes, sir.
ओके चिकोस, सो अब आपको ये यहाँ तक आ गए तो आई एम श्योर 100 साल से ऊपर तो कोई भी नहीं होगा. सो यू आई एम टीचिंग द ओनली एंड ओनली बिकॉज आई वांट यू टू राइट योर एज, एंड वंस यू राइट योर एज यू कैन टॉक अबाउट योर लाइफ एंड यू कैन टॉक अबाउट लाइक दिस. तो इसमें सब अपना रिप्लेस कर लेंगे. एग्जाम्पल me llamo, कोई भी क्या नाम है क्लास में किसी का, सपोज सौरभ, तो यू कैन से me llamo सौरभ, soy de la India, tengo 25 años, I'm 25 years old, suppose estudio en IGNOU, hablo हिंदी e इंग्लिश, या फिर hablo un poco de español भी बोल सकते हैं भाई, a bit of Spanish. Mi asignatura favorita es ciencia, my favorite subject is science, mi mejor amiga se llama Anita, if you have a friend known as Anita, or whatever you want to write. Clear? But इसमें सब yo में लिखेंगे, yo. Yes, go ahead Saurabh. Well, sir, there's a word poquito. What does it mean, sir? पोको, Does देखो it पोको, same as पोका poco? होता है, देखो हाँ, पोको होता है छोटा, मतलब बहुत कम. पोकीतो होता है कम से भी कम, मतलब बहुत बहुत कम. Okay, sir. तो स्पेनिश में किसी भी वर्ड के आगे ईतो और ईता लग जाएगा तो मतलब उसका साइज बहुत छोटा हो गया. Okay, sir. Please go ahead. That's it. Please check your email. Mr. Vikas has sent the invitation on 6th December. What for? To me? Share Google Classroom. I am not a part of Google Classroom. What was the word for 90? Spelling noventa, Noventa. Book में सब है ना, ये देखो book. We are in the book ना. If you go to page number, here रहा. पेज नंबर 61 पे पूरी काउंटिंग है. ओके, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे सब है. नो नीड टू लुक फॉर हियर एंड देयर. पेज नंबर 61 पे यू हैव ऑल द काउंटिंग. इसका ऑडियो भी है तो प्लीज लिसन टू द ऑडियो एट योर होम. एंड यू हैव अ वर्क फॉर टुमारो. द वर्क इज दैट यू हैव टू राइट योर इंट्रोडक्शन, एंड टुमारो somewhere around 8 to 10 students will give their introduction in the class. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone, I Yes, sir. hope I'm very very clear. जो देगा देखो, I'll tell you, it's an open class. जिसको बोलना है वो आके बोलेगा, जिसको नहीं बोलना है, no one is forcing you. You are all elders enough, big enough to do good for yourself, and don't let anyone to force you or to let you know that you have to speak. You should be knowing it right now. Clear? So prepare your introduction. इतने ही, कितनी लाइन, ज्यादा नहीं, 6-7 लाइन्स. और इफ ओके, अगेन वन मोर टिप, इफ यू वांट टू राइट मोर इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, जितनी भी आर एंडिंग वर्ब है सबसे एक सेंटेंस बना दो, बन गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन. 10 लाइन 15 लाइन का. क्लियर? सो लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम 4:30 to 6:30. Adios. I guess the recording will be sent to you guys whenever it's required. I guess tomorrow. सर वो रिकॉर्डिंग वाला एक एग्जाम डालना था, वो डाल दीजिए प्लीज. 31 से पहले पहले वो जुलाई जून के लिए वो I guess that will be taken care by Vikas. He's the one who does it. Okay, so don't worry. ओके. तो जब भी डालेंगे I guess टाइम तो होगा जितना भी होगा. 31 लास्ट है ना असाइनमेंट के लिए, तो थोड़ा इश्यू था मतलब. Okay. Okay, so this would be it from my side. Thank you for being Sir, so patient. Yes, Juhi. sir, I didn't get the link for Google Classroom invitation. I checked my mail also. I replied to your mail as well that I My didn't- mail नहीं, मैंने mail नहीं किया होगा, विकास सर ने mail किया होगा, तो you mail him once. He will send it to you. Sure. Okay, you mail him once. Thank you. Thank you. Adios, everyone. Adios. Thank you, sir. Thank you. Adios. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Telugu. Sir, sir, the gracias, sir. gracias could be said as mucho gracias while conjugating. Again, can you please repeat your question? Sir, the muchas gracias expression which we use, could it be said as like conjugated with yo and say mucho gracias? नहीं, इसमें verb तो है ही नहीं ना. आप conjugate किसको करोगे? नहीं mucho verb है, नहीं gracias verb है. Like very thank you. नहीं, इसमें verb है ही नहीं ना. To thank is आग्रह दे से, वो बात की बात है. वो thank you is an expression, it's not a verb. वहाँ पे verb है ही नहीं.
तो उसमें Okay, कॉन्जुगेशन का कोई मतलब ही नहीं होता. ओके, थैंक यू चीकू. gracias, Anand. Thank you.